गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट 1961। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने क्वेश्चन किया है कि जो कॉलोनियल एरा लॉज हैं वो अभी तक कंट्री में चल रहे थे और चल रहे हैं रादर, और उनमें से एक है ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट 1961, जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया था। जो 1876 में ये एक्ट आया था और इसमें एम्पावर किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो पब्लिक परफॉर्मेंसेस को बैन कर सके। और इस एक्ट को स्कैंडलस, डिफेमेटरी, सेडिशियस और ऑब्सीन जो है डिक्लेयर किया गया। और आई एम सॉरी, जो भी पब्लिक परफॉर्मेंसेस को स्कैंडलस, डिफेमेटरी, सेडिशियस और ऑब्सीन डिक्लेयर करते थे उनको बैन कर दिया जाता था। तो इस एक्ट में जो है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो इंडिया में आ रहा था उसको बैन करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो एक पार्ट ऑफ अ वाइडर क्रैकडाउन था, और जिसमें कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट भी आता है और सेडिशन लॉज भी आते हैं हमारे, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो किसी भी प्ले, पेंटोमेम या ड्रामा को पब्लिक में बैन कर सकती थी अगर उसे लगता था कि ये स्कैंडलस है, डिफेमेटरी है, सेडिशियस है या ऑब्सीन है। बैन जो है गवर्नमेंट के ओपिनियन पर बेस्ड होता था, गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिप्शन होती थी। मैजिस्ट्रेट्स जो है वो सर्च और सीज भी कर सकते थे वेन्यूज़ को अगर उन्हें लगता था कि परफॉर्मेंसेज जो है वो होस्ट की जा रही हैं। वॉयलेटर्स को 3 महीने की जेल, फाइन दोनों भी हो सकता था। एक्ट को फॉर्मली रिपील किया गया 2018 में, जब गवर्नमेंट ने ऑब्सोलीट लॉज को रिमूव करना शुरू किया, जो मोदी गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप एक्सरसाइज थी रिपील करने की ऑब्सोलीट लॉज को। तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट 1876 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया था 1956 में, लेकिन वो एक्ट जो उसको रिपील नहीं किया गया था। तो कुछ जो है स्टेट्स में ऐसे सिमिलर लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करते हैं, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग कई और स्टेट्स जैसे कि दिल्ली, वहाँ पर ऐसे लॉज को रिपील भी किया गया। तो 1953 में हुआ क्या था जब ये लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। तो लखनऊ ब्रांच ऑफ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने एक प्ले जो है मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी पर जो है वो प्लान किया था। थिएटर ग्रुप को परमिशन भी मिली थी, लेकिन जो है बाद में लखनऊ मजिस्ट्रेट ने वो परमिशन हटा दी और प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो है वो मिड परफॉर्मेंस सर्व किए गए जानबूझकर। और आर्टिस्ट जब प्ले कर रहे थे तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया गया। तो उस समय जो है कोर्ट ने एग्जामिन करते हुए ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट को 1976 को, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एग्जामिन किया और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और कहा कि ये आर्टिकल 19 की जो है वॉयलेशन करता है ये एक्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 372 भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये समझने के लिए कि आर्टिकल 372 कहता है कि लॉ जो कि लॉज जितने भी थे इंडिपेंडेंस के टाइम पर वो कंटिन्यू करेंगे देश के आज़ादी के बाद, जब तक उन्हें रिपील या फिर अमेंड ना किया जाए। लेकिन कॉलोनियल लॉज को प्रिज्यूम किया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन जो लॉज इंडिपेंडेंट इंडिया की पार्लियामेंट बनाती थी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो प्रिज्यूम किया जाता है कोर्ट द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है ताकि जो अप्रूवल प्रोसेस है आधार को ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट का, उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके, ठीक है। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म रीसेंट अमेंडमेंट्स जो हुई हैं आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल्स 2025 में, उनको भी इंकॉर्पोरेट करता है। और न्यू रूल्स डिज़ाइन किए गए हैं गुड गवर्नेंस को सपोर्ट करने के लिए। एक पार्ट है ये ऑनगोइंग एफर्ट्स का, ताकि प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया जा सके, सर्विस डिलीवरी एनहांस हो सके और ईज़ ऑफ लिविंग सिटीजन्स के लिए हो सके। पोर्टल जो है वो एक रिसोर्स रिच गाइड की तरह काम करेगी, ऑफर करेगी डिटेल्ड एसओपी ऑथेंटिकेशन के लिए। फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो उसको भी इंटीग्रेट किया जा रहा है कस्टमर फेसिंग एप्स ऑफ प्राइवेट एंटिटीज़ को, ठीक है। आधार तो आपको पता है 12 डिजिट यूनिक ऑथेंटिकेशन नंबर है जो एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सर्व करता है। आधार प्रोग्राम को 2009 में लॉन्च भी किया गया था और ये मैंडेटरी है कई तरह की गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए इस समय पर, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नियोनेटल सेप्सिस। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल स्टडी ने कहा है कि मोर देन 1/3 ऑफ न्यू बॉर्न्स जो सेप्सिस के साथ बॉर्न होते हैं वो डेथ हो जाती है उनकी। तो नियोनेटल सेप्सिस जो है वो एक ब्लड इन्फेक्शन है जो इन्फेंट्स जो कि यंगर देन 90 डेज ओल्ड है उनमें होता है।
तो इसमें दो तरह के न्यूनेटल सेप्सिस होते हैं। पहला होता है अर्ली ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस, जो विद इन 72 आवर्स ऑफ लाइफ में डेवलप होता है। फिर लेट ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस, जो कि 3 days ऑफ लाइफ के बाद डेवलप होता है। तो इसमें बॉडी टेम्परेचर चेंजेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, डायरिया, डिसीज बाउल, डिक्रीज बाउल मूवमेंट्स, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसकी प्रेवलेंस अगर हम देखें तो नियोनेटल सेप्सिस जो है उससे लगभग 5,50,000 डेथ्स ग्लोबली होती हैं हर साल। इंडिया में लगभग 1/4 ऑफ ग्लोबल बर्डन है इन डेथ्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्लू घोस्ट मिशन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट मिशन लूनर लैंडर जो है वो सक्सेसफुली टच हो चुका है मून के मेयर क्रिसिम रीजन में। ठीक है, तो ब्लू घोस्ट लैंडर जो है वो फायरफ्लाई एरोस्पेस ने डेवलप किया है। 10 नासा के पेलोड्स जो हैं वो गए हैं CLPS प्रोग्राम के अंडर। ब्लू घोस्ट मिशन जो है वो एनहेंस करेगा हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लूनर एनवायरनमेंट को। इसमें एक वैक्यूम भी गया है लैंडर में, जो कि कलेक्ट करेगा लूनर सॉइल सैंपल्स को। और ये एक ड्रिल है जो कि केपेबल है मेजर करने के लिए टेम्परेचर्स अप टू 10 फीट। लैंडर जो है वो स्टडी करेगा हीट फ्लो को फ्रॉम मून्स इंटीरियर, एनालाइज करेगा प्लूम सरफेस इंट्रैक्शंस को। लैंडर जो है वो ऑपरेट करेगा अप्रॉक्सीमेटली 14 अर्थ डेज तक। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाइट आइलैंड। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जो ओनर्स हैं न्यूजीलैंड के वाइट आइलैंड वॉल्केनो के, जो 2019 में इरप्ट हुआ था, उसको जो है उनके अगेंस्ट जो कन्विक्शन है उसको ओवरटर्न कर दिया गया है कंट्री के हाई कोर्ट द्वारा। तो वाइट आइलैंड एक एक्टिव कंपोजिट स्ट्रेटो वॉल्केनो है बे ऑफ प्लेंटी न्यूजीलैंड में। करंटली न्यूजीलैंड का सबसे एक्टिव कोन वॉल्केनो है। ये यहाँ पर लगभग पिछले 1.5 लाख साल से वॉल्केनिक एक्टिविटी कॉन्टीन्यूसली चलती है। आइलैंड में लगभग 325 हेक्टेयर्स का एरिया आता है। आइलैंड को जो है कैप्टन जेम्स कुक ने साइट करके नेम किया था उनके नाम पर 1769 में। और ये प्राइवेटली ओन्ड आइलैंड है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिष्टी स्कीम। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। गुजरात जो है नेशनल लीडर बन रहा है मैंग्रोव फॉरेस्टेशन में। लगभग 19,000 हेक्टेयर्स जो है वो सिर्फ 2 साल के अंदर सेंटर की मिष्टी स्कीम के अंडर गुजरात ने जो है वो बनाया है मैंग्रोव। मिष्टी स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसमें मैंग्रोव कवर को इंक्रीज़ करना है अलॉन्ग द कोस्ट लाइन और सॉल्ट पैन लैंड्स पर। 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसे लॉन्च किया था ताकि रिस्टोर और रिफॉरेस्ट हो सके मैंग्रोव्स। प्राइमरी फोकस इसका है सुंदरबन डेल्टा, हुगली आइस्चरी और अदर बे पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मिष्टी स्कीम के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलती है लोकल कम्युनिटीज़ को ताकि वो मैंग्रोव प्लांटेशन एक्टिविटीज़ अंडरटेक कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जोंगा ट्राइब। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से केओंझार के ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो जोंगा ट्राइब के अगेंस्ट होते हैं उनके उनके ऊपर। तो जोंगा ट्राइब वन ऑफ द 13 PBTGs हैं उड़ीसा की। लगभग 50,000 के आसपास इनकी पॉपुलेशन है। करंटली ये डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केओंझार और धिरन कनाल में उड़ीसा में ये कंसनट्रेटेड हैं। इनिशियली ये रिलायंट थे हंटिंग, गैदरिंग और लिमिटेड कल्टीवेशन पर। जोंग पीपल जो है उनकी एक्सपर्टीज़ है बास्केट वीविंग में, और ये अपने नीबरिंग कास्ट विलेजेस के साथ प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज भी करते थे। इनमें कुछ हिंदू बिलीव्स भी हैं, लेकिन जोंग जनरली जो है मोस्टली एंशिएंट एनिमिस्टिक रिचुअल्स को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हार्पून मिसाइल। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस एयरफोर्स जो है वो एक्सप्लोर कर रही है यूज़ ऑफ हार्पून एंटी शिप मिसाइल अपने F-16s पर। तो हार्पून मिसाइल जो है एक सबसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो इसको डेवलप किया गया बोइंग द्वारा यूएस नेवी में के लिए। 1977 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। करंटली ये लगभग 30 कंट्रीज से भी ज़्यादा इंक्लूडिंग इंडिया की ये आर्म्ड फोर्सेज में सर्व कर रहा है। ऑल वेदर मिसाइल है, 90 से लेकर 240 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी। इसको शिप्स, सबमरीन्स, शोर बैटरीज, एयरक्राफ्ट किससे भी लॉन्च किया जा सकता है। लैंड स्ट्राइक और एंटी शिप मिशंस दोनों में ये कैपेबल है। और इसमें GPS असिस्टेड इनर्शियल नेविगेशन है। मिड कोर्स गाइडेंस भी की जा सकती है इसकी, और एक्टिव रडार सीकर है ताकि ट्रैक और हिट किया जा सके इसे सरफेस टारगेट्स के अगेंस्ट। So now let us see all these topics in English.
So the first topic is Dramatic Performances Act 1876. So this is a typo here. So PM Modi has recently questioned the continued existence of colonial era laws, or which one of which permitted the arrest of people dancing in public places. So this is the Dramatic Performances Act, which the Prime Minister was referring to. This had empowered the British government to ban public performances which they deemed scandalous, defamatory, seditious, or obscene. So, Dramatic Performances Act was meant to suppress nationalist sentiment in India. It was part of a broader crackdown which included the Vernacular Press Act and the sedition laws as well. So, the government could prohibit any play, pantomime, or drama in the public if they deemed it scandalous, defamatory, seditious, or obscene. So this ban was based on government's opinion. Magistrates could search and seize venues suspected of hosting prohibited performances. The violators could face up to 3 months in jail, a fine, or both. The act was formally repealed in 2018. The Modi government undertook a flagship exercise to repeal obsolete laws, which aimed to improve ease of doing business. Although the Dramatic Performances Act of 1876 was declared unconstitutional and no longer in use, it was formally repealed by Parliament through the Repealing and Amending Act of 2017. So it had not been a valid law since 1956 because it was declared unconstitutional. Okay, so what happened is that the Lucknow branch of the Indian People's Theatre Association was planning to stage a play based on Munshi Premchand's short story Idga. Initially, the theatre group had received permission, but the Lucknow magistrate later revoked it without any explanation, and the prohibitory order was served mid performance, but the artists continued to play, which led to legal action. The court examined the constitutionality of the Dramatic Performances Act of 1876, and the court declared it unconstitutional, stating that its procedural restrictions on that its procedural restrictions on free speech and expression violated Article 19 of the Constitution. So we already have Article 372, which states that laws which were there at the time of independence would continue unless they are repealed or amended. But colonial era laws are presumed constitutional. Okay, are not presumed constitutional. So that when they are challenged, the government must justify their validity. In contrast, independent India's parliament, when they make some laws, they are presumed constitutional, and the burden of proof lies in the petitioner to show that they violate the constitution. Okay. So the next topic is Aadhaar Good Governance Portal. This topic is important for your governance section. Recently, central government has launched the Aadhaar Good Governance Portal to streamline the approval process for Aadhaar authentication requests. So, Aadhaar Good Governance Portal is aimed to streamline the approval process for Aadhaar authentication requests. It was launched by the Ministry of Electronics and Information Technology. This platform follows the recent amendments to the Aadhaar Authentication for Good Governance Rules 2025, and the new rules are designed to support good governance and improve the delivery of various welfare services and benefits. This portal is part of the ongoing efforts to simplify processes, enhance service delivery, and improve the overall ease of living for citizens. Okay. The portal shall work as a resource rich guide and offer detailed SOP for authentication seeking entities on how to apply and how to onboard for Aadhaar authentication. Face authentication may also be integrated in the customer facing apps of private entities. Okay. So, what is Aadhaar? It is a 12-digit unique identification number which is issued by the Unique Identification Authority of India to every individual resident of India. It serves as a proof of identity which is linked to the individual's biometric and demographic information. Aadhaar program was launched in 2009 by the UIDAI with the goal of providing a unique and verifiable identity for every resident of India. It is now mandatory for a number of government services, and it is also being used by private companies for identification purposes. Okay. So the next topic is neonatal sepsis. This topic is important for your uh, social issues. So Lancet Global Health Journal study has said that more than a third of newborns diagnosed with sepsis could die. So neonatal sepsis is a blood infection which occurs in infant younger than 90 days old. So classification of neonatal sepsis can be done as early onset neonatal sepsis, which develops within first 72 hours of life. Then there is
late onset neonatal sepsis, which develops after 3 days of life. So symptoms include body temperature changes, breathing problems, and diarrhea or decreased bowel movements. Neonatal sepsis results in more than 550,000 deaths globally every year, and India accounts for one fourth of the global burden, okay, of such deaths. So the next topic is Blue Ghost mission. This topic is important for your science and tech section. So Firefly Aerospace Blue Ghost lunar lander has successfully touched down on Moon's Mare Crisium region. So Ghost lander is carrying 10 NASA payloads as part of the commercial lunar payload services program, which is meant to enhance our understanding of the lunar environment. So this lander also carries a vacuum, which is meant to collect lunar soil samples and a drill capable of measuring temperatures up to 10 feet below the surface. This lander will study heat flow from the moon's interior. It will also analyze plume surface interactions. This lander will also operate for approximately 14 Earth days. Okay. So the next topic is White Island. This topic is important for our environment section. Owners of New Zealand's White Island volcano, which erupted in 2019, killing 22 tourists and local guides, have had their conviction against them overturned by the country's High Court recently. So White Island is an active composite stratovolcano in the Bay of Plenty, New Zealand. It is currently New Zealand's most active cone volcano, and it has been built up continuous it has been built up by continuous volcanic activity over the past 150,000 years. The island covers an area of about 325 hectares. That island was sighted and named by Captain James Cook in 1769, and it's a privately owned island. Okay. So the next topic is Mishti scheme. This topic is important for your environment section. So Gujarat has emerged as the national leader in mangrove afforestation, covering about 19,000 hectares in just 2 years under the central government's Mishti scheme. So this scheme is a government-led initiative aimed to increase the mangrove cover along the coastline and on salt pan lands. It was launched by the Ministry of Environment in 2023 to restore or reforest mangroves in the coastal areas. So this scheme is primarily focused on the Sundarban Delta, Hooghly estuary, and other bay parts of the country. Mishti scheme also envisages government providing financial assistance to local communities to undertake mangrove plantation activities. It also has provisions for awareness campaigns to educate people about the importance of mangroves and protecting the environment. So the next topic is Joanga tribe. This topic is important for your social issues. So, National Human Rights Commission has recently sought an action taken report from the District Magistrate of Keonjhar on alleged human rights violations of the Joanga tribe, which is a PVTG in the district. So, Joanga tribe is one of the 13 PVTGs of Odisha. As per the 2011 census, the Joang population stands at approximately 50,000. They are primarily concentrated in the current districts of Keonjhar and Dhenkanal in Odisha. They were initially reliant on hunting, gathering, and limited cultivation, and they showcased expertise in basket weaving, exchanging their products with neighboring caste villages for essentials like salt, oil, and food. So they have some Hindu beliefs, but they practice mostly ancient animistic rituals. Okay. So the next topic is Harpoon missile. This topic is important for your security section. So US Air Force is exploring the use of Harpoon anti-ship missile on its F-16s, which is signaling a potential shift in its approach to naval warfare. Harpoon is a subsonic anti-ship cruise missile which was developed by Boeing for the US Navy. It was first introduced in 1977. It is currently in service with the armed forces of more than 30 countries, including India, of course. And it's an all weather, over the horizon anti ship missile system. Uh, it is 4.5 meter in length and weighs about 512 26 kg. Its range is between 90 to 40 kilometers. It can be launched from ships, submarines, shore batteries, and aircraft. It is capable of executing both land strike and anti ship missions. It incorporates GPS assisted inertial navigation, which enables the system to have both an anti ship and a land attack capability. It uses mid course guidance and an active radar seeker to track and hit surface targets. Okay, so these were our topics for today.
We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.